मेरे साथ एक बहुत खास गेस्ट यहाँ पर जुड़ रहे हैं। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बीबीसी के, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो कहानियाँ और प्रोसीडिंग्स रही हैं कानून की, माल्या से लेकर नीरव मोदी के केसेस को, उसको उन्होंने कवर किया। समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी मुश्किल है ये प्रक्रिया और कितनी ज़रूरत है लगातार भारत को इसको परसू करने की। How I've seen cases in the past. I've reported on cases like the Abu Salem's extradition in Portugal, in Lisbon many years ago. And it's very difficult. Despite the fact that you may have the extradition treaty, it helps, but there's a lot of process. Does the time and the legal process eventually help the economic offender or someone who is actually a fugitive? I think the law definitely helps the economic offender. The fact that Britain is part of the European Convention on Human Rights, it is answerable. The justice system here is essentially answerable to the European Court of Justice. Means that there is a huge sort of the concept of human rights plays a huge and significant role in proceedings. And as a result, they do tend to drag on, extradition proceedings do tend to drag on for years and years. A great example is just from yesterday, Julian Assange, the Home Secretary, Priti Patel, signed off on his extradition yesterday, and yet he still has a legal process that will extend to a minimum of another 3 to 5 years. And it will eventually go all the way to the European Court of Justice, and his extradition will be decided, as will, presumably, in the case of Nirav Modi and Vijay Malya, the cases will be decided eventually by the European Court of Justice. जनता की राय लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, इसलिए नाराजगी जो नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे मामलों में लोगों के मन में है, वो समझ में आती है भारत में, खासतौर पर 2018 के बाद से। लेकिन साथ में ये भी सच है कि जिस देश में वो आ गए हैं, वहाँ पर उस अपराध को साबित करना होता है वहाँ की अदालती कार्रवाई में, जिसमें वक्त लगता है। उस वक्त का फायदा एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको मिलता है। इसीलिए हर स्तर पर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होने के साथ साथ इस तरह के मामलों में हर स्तर पर दोनों देशों के बीच होने वाला सहयोग, राजनयिक हो कानूनी हो, वो बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है। I don't know if that's the right word, but some kind of a protectionism because of the laws here. Absolutely. Not back in India. Absolutely. And, fairness or unfairness is ultimately society needs to judge that. But the justice system here can only assess a case and can only judge a case based on the prevailing laws of this country. And I know a lot of legal commentators, including judges, for instance, and politicians, have often said that the whole concept of human rights often stymies the delivery of justice in many instances. Having said that, the concept of human rights is there for the wider protection of society. In some instances, it may not fairly serve society, but ultimately it is for the greater good of society. हम इस वक्त लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर मौजूद हैं और यहाँ उन लोगों की प्रतिमाएं लगी हैं जिन्होंने अपने लोगों के लिए अलग अलग स्तर पर हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा भी मौजूद है। और अब अजीब इत्तेफाक देखिए कि ये वही देश है जिस देश में हम मौजूद हैं, जिससे आज़ादी दिलवाई गांधी जी ने, और यहाँ पर फ्यूजिटिव्स आकर बस जाते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर अब मसला बताया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और दशकों से बात कही और लिखी जा रही है। असलियत में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मसलों को लेकर लोगों की नाराजगी मैंने बताया, वो समझ में आती है। दूसरा एक और बहुत बड़ा पहलू है कि अगर आप एक्स्ट्रेडिशन जो है लोगों के प्रत्यार्पण के दर को देखें तो वो ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो इसीलिए एक तरह से इस इंसाफ की लड़ाई में जो ख़ास तौर पर फ्यूजिटिव्स की हम बात कर रहे हैं और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले केसेस की हम बात कर रहे हैं, उम्मीद लंदन में रहकर अपना पैसा लाकर कानूनी लड़ाई और सरवाइव करने की कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। It's not as we may believe only the Vijay Malya story or the Nirav Modi story.
there's many more that has not been part of public opinion yet in India. No, it has not. And you know, we talk about Vijay Malya and Nirav Modi and Julian Assange because these are cases that are Known covered wide exactly, and because of the media. very widely covered. I covered both the Nirav Modi trial and the Vijay Malya trial, and the time devoted, for instance, to prison conditions, for instance, ventilation in the prison in Mumbai, natural light in the prison in Mumbai, the amount of time and effort and resources devoted to issues like that is quite extraordinary. You know, 8, 9, 10 hearings will be devoted to how will Mr. Malya cope with the conditions at Arthur Road Jail in Mumbai. And that the basis for that is the Human Rights Act. And That's a very important point you're making. I'd like to sum up. जो ये बता रहे हैं इसको जरा गौर से सुनिए, ये बहुत अहमियत, और इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया है कि यहाँ पर जब कार्रवाई होती है, अदालती कार्रवाई चलती है, मेरे पीछे अब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है, तो ह्यूमन राइट्स की वजह से इन सब बातों पर बहुत गौर किया जाता है कि अगर विजय माल्या कोई जेल में पहुंच रहे हैं किसी एक्सीडिशन के बाद मुंबई में, तो वहाँ की हवा पानी कैसा होगा, वहाँ पर वो रहेंगे कैसे, उसके इंतजाम। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को सफलताएं भी मिली हैं। तो ब्रिटेन के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पुरानी है और यहाँ की प्रक्रियाओं को देखते हुए ऐसा नहीं है कि सफलता की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कभी वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा वक्त भी आ सकता है जब फ्यूजिटिव्स को जो अपराध या बैंकों का पैसा लेके वो भागे हैं, उन्होंने वहां किया है, उसके लिए पनिशमेंट भी मिले कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद। ये है मेरा आखिरी का पॉइंट जो कि बहुत अहमियत रखता है भविष्य की ओर देखते हुए। मैं अभिज्ञान प्रकाश इस खास सीरीज के लिए लंदन से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।